Fuel will continue to burn a hole in your pocket with the seventh hike that we're reporting in 8 straight days. Petrol prices in Delhi, for instance, have crossed 100 rupees a litre. Prices are up by 80 paise a litre for petrol and 70 paise a litre for Delhi. Now, this is an almost 5 rupee hike per litre that we're reporting in the last 8 days. Let's get you reactions from ground zero. Meher Pandey joins us from Delhi. Mohammad Ghazali joins us from Panchkula, and Saurabh Gupta joins us live from Mumbai. Saurabh, to you first, because petrol prices are the highest in the state of Maharashtra. They've been above the 110 rupees a litre mark for a few days now. Absolutely. In fact, we're at one of those petrol stations, and the prices seem to be the highest, given that what we're seeing on the board as far as prices are concerned is at least 100 and 14 rupees for a litre of petrol. That's the price in Mumbai. And if you go for the better quality of the fuel, then it's of course 117 rupees. So that's how expensive fuel is in Mumbai. And that, of course, it also shows that it's one of the most expensive cities for fuel, and a lot of the components of the various duties and taxes on petrol is divided between the center and the state, and this is of course something that we'll try and get a word from people. Sir, I presume you regularly fill petrol at this pump. Over the last few days, you've seen the rise. Your thoughts? It's getting too hardening now. There was a time when it was quite reasonable, but now driving a car, I think everybody, I think the next step would be to go to electric. That's the only option which I as a personal would opt for, because it's way beyond normalcy. So it's no more normal now. So you are considering electric vehicles because of the fuel price? Yeah, of course. That's the only option. If you see, the most practical option, and that's the best option, I suppose. So that's going to be the next step. Yeah. So your name, sir? Manish Paudwal. All right. So that's of course the reactions from Mumbaikars. Now, a lot of the people in Mumbai, especially those who can afford, perhaps are looking at moving to electric vehicles as an alternative if they can, because of the continuous hike in fuel prices. All right, but 115 rupees a litre is the cost of the normal petrol, as Saurabh is reporting. And if you go for the slightly better quality of petrol, then it's 117 rupees a litre. People in Mumbai saying it's just unaffordable and they need to now consider alternatives, including electric vehicles. Let's get in a word from Meher Pandey now. She's joining us from Delhi. Meher, what are the prices in Delhi? We know petrol has crossed 100 rupees a litre today. How are people responding to this? Yes, Rishika, we're at a petrol station in Delhi. This is the 7th hike in 8 days. Almost every day there's been a hike in petrol. We'll speak to someone here. And we've seen people move very fast. Everyone only getting 1 or 2 litres, 3 litres at max. Because of course it's not affordable to fill a full tank anymore. Sir, आप थोड़ा बताएंगे कि अब ये जो almost रोज पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपके घर पर इससे क्या स्थिति हो गई है? बहुत असर है जी, बताइए थोड़ा कि क्या क्या बदल गया? क्या बदल गया? 10,000 12,000 रुपये कमाने वाला अगर मान लो 100-150 रुपये का पेट्रोल डेली फूंक जाएगा तो बच्चे क्या पढ़ाएंगे? आप क्या काम करते हैं? हम तो माली का काम करते हैं, पार्ट टाइम का। अच्छा, हाँ जी। तो आपका घर नहीं चल पा रहा है अभी? जो रोज चलेगा सर, इतनी महंगाई है। आटा 30 रुपये, सारे तो महंगाई है। आटा से लेके तेल साबुन तक सारे तो महंगे हैं। जो साबुन 50 रुपये का रेट है उसमें डिस्काउंट 1 पैसे भी नहीं छोड़ते हैं। महंगाई तो है ही है जी। So one thing to keep in mind is that the fuel price hike also leads to inflation in other places. We'll try and speak to some other people. सर, आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे? मुझे बहुत जल्दी है सर, 2 मिनट से कम लगेगा। पेट्रोल के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। 100 रुपये से ज़्यादा हो गए पिछले 8 दिन में, 7 बार बढ़ा है। थोड़ा बता सकते हैं? परेशान है बढ़ने से हम भी जी। हाँ, इससे महंगाई से भी परेशान है, पेट्रोल बढ़ने से भी परेशान है। तो रोज़ आप कितना भरवाते हैं? 200-250 रुपये का रोज़ खर्च सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं? हाँ, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होता। फुल टैंक वगैरह? फुल टैंक भी करवा लेते हैं। लेकिन अभी मुश्किल चल रही है। हाँ, आपके घर में क्या हो ही नहीं पाता फुल टैंक, घर में खर्चा ही नहीं चलता। फुल टैंक कहाँ से होगा? जी।
We'll also try to speak to one more person who we've luckily been able to get. सर आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे. पेट्रोल के प्राइस आज 100 से ऊपर जा चुके हैं दिल्ली में. आप थोड़ा बता पाएंगे इससे आप पे क्या असर हुआ है? मैडम असर तो बहुत हुआ है. देखो 400 रुपये का पेट्रोल आता हूँ, मेरी 450 में टंकी भर जाती है. अब 3 दिन मुश्किल से चलता है. बड़ी दिक्कत होती है पेट्रोल की. तो हर बार अब आप कम पेट्रोल भरवा रहे हैं? नहीं, 400 का डलवाता हूँ. अब 100 रुपये हो गया. अब देखो कितना आएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि लीटर का हिसाब होता है इसमें. तो घर पर क्या असर हो रहा है? आप क्या काम करते हैं? घर की खर्चे और बढ़ गए होंगे? एक्चुअली मेरा फील्ड का ही काम है, क्लाइंटों के एप्लीकेशन अटेंड करने का. लेकिन जिस तरह से महंगाई हो रही है, पेट्रोल आए दिन बढ़ रहा है, घर का बजट भी हिल रहा है. अब ऑफिस से किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता है 3.5 रुपये पर किलोमीटर. अब हम आगे लिख के देंगे, अब वो आगे सोचेंगे, या फिर हमें बैटरी वाली गाड़ी देंगे, क्या देंगे मालूम नहीं कुछ भी. मतलब आगे समाधान तो यही है कि बैटरी वाली गाड़ी लेंगे, क्योंकि महंगा बढ़ते रहेगा. मेरे को लगता है 150 तक आ जाएगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते. तो आपको लग रहा है कि बैटरी की हो जाएगी अब? बिल्कुल बैटरी होगी. जगह जगह मशीनें भी लग रही है. पेट्रोल की रहेगी नहीं गाड़ी, कोई लेगा भी नहीं पेट्रोल गाड़ी. So even here people are saying that there are considerations of going away from petrol driven cars, fuel driven cars to electric vehicles, battery driven vehicles. So that is maybe Well, a point of shift. Right, and a whole host of voices there, Meher. Very interestingly, there are people who are also telling you about how this has impacted the budget of their entire house, because everything becomes more costly when fuel goes up. Remember, it's not just affecting your vehicle, it's affecting a whole host of consumer products. And you know, the price rise in terms of the consumer products is so marginal that you don't directly feel the pinch, but it does go up over a period of time. So household budgets, they're completely disrupted because of the fuel price rise. Let's also get in a word now from Ghazali is joining us from Panchkula. Ghazali, you know, what are the fuel prices there and how are people responding to this? So the petrol prices are like 101.28 and diesel prices 92.47. And I'll tell you, Rishika, what happened before elections in Punjab. We all knew Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi had announced reduction in fuel prices, and that was a welcome move back then. But after elections, neither Haryana nor Punjab nor Chandigarh, none of them have reduced the prices. And I'll speak to some of the consumers here. तेल के दाम बढ़ रहे हैं डेली करीब. क्या काम करते हैं, पहले नाम और काम बताएं. नाम मेरा मोहन है. काम ड्राइविंग का. अच्छा, ड्राइविंग का ही काम है. तो किस तरह से असर पड़ रहा है ड्राइविंग के काम पे? क्या डेली टंकी फुल वगैरह करवा रहे हैं अब या नहीं? हाँ, जैसे दिल्ली जैसे जहाँ 500 का तेल हफ्ता चल जाता था, अब वही 500 का तेल 5 से 4 दिन. 5 से 4 दिन. तो घर पे भी असर पड़ता है, घर के इकोनॉमिक्स पे, घर चलाने में? वो तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही. ठीक है. So you see, people are saying that the 500 rupee fuel which they used to get earlier, they could run for a week or 3 or 4 5 days. आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश है. रितेश है. क्या करते हैं आप? मैं जरा एलईडी स्क्रीन का काम करता हूँ. एलईडी स्क्रीन से ही करते हैं. तो आपका मतलब बाइक से ही कस्टमर्स अटेंड करते हैं? जी 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 जी. तो तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो उससे कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा असर बढ़ रहा है. बहुत ज़्यादा ही असर बढ़ रहा है. दिनों दिन तेल बढ़ते जा रहे हैं, तेल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जेब पे बहुत ज़्यादा असर बढ़ रहा है. जेब पे बहुत ज़्यादा. सैलरियाँ वही की वही है, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही हैं. सरकार तो कह रही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग है, उसके वजह से. सर वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी गरीब आदमी तो मारा जा रहा है ना. This is the general sentiment over the rising fuel prices, that the incomes are not increasing, but due to high or rise in the fuel prices, it is affecting the savings, income, expenditure, everything.